Check audio. Yeah, Manish, can you hear my voice? Yes, I can hear your voice. I can Okay, clearly. so we'll My wait for voice. some time. Uh, नहीं in मेरा the वॉइस कैसा meantime, है? ठीक है. एकदम perfect है, एक perfect. मिनट एक मिनट एक मिनट. एक मिनट जस्ट होल्ड मिनट. कॉलर माइक लगा देता हूँ. हाँ अभी कैसा है? ठीक है, ठीक है. ठीक है ना. अच्छा तो अभी. Manish, we are हाँ. going to start at 4:30. Okay. Perfect. In the meantime, more participants are expected. So we'll start at 4:30 exactly. ठीक है. आई एम रेडी. मेरे को बोल दे कभी भी करने का. हाँ बोल. हेलो. हाँ बोल भाई.
Okay, good afternoon, everyone. If you can all hear my voice, can you give me a quick check in the chat box? Anirudh, okay. All of you can go to the chat box and say yes. So if you can give me a quick check in the chat box, if you can see. Okay, great. Even if you can raise your hands as well. Avinash, Anirudh, all of you. Mayuresh, fantastic. I can see your hands. Good. So guys, we're going to start this program. This is a 4-session kind of a program. In the first session, right from beginning to basics to advanced, we are going to do it. So today, we are going to learn about the basic fundamentals of the stock market operations. Okay, basic terminologies, concepts that's involved. And tomorrow, we are going to talk about technical trading. Day after tomorrow, we are going to talk about option trading strategies. And then on the fourth session, we're going to discuss about, mutual fund investing, mutual fund ETF, that kind of investing, how to choose your investing. So the name of the program is Basics of Investing. And here we are going to learn about all, right from stocks to mutual funds to ETF to, everything. ओके सो ओके करुणाकरण ने बोला है कि हिंदी में भी बोलिए सर ठीक है हम लोग हिंदी में भी बोलेंगे अच्छा चैट इज डिसेबल्ड ओके चैट इज डिसेबल्ड ओके लेट मी सी ओके I think you can hear here so that is why we are not getting to hear the chats. Okay, let me try. So the speaker today in the meantime okay, so we're going to start in next few minutes. We're going to wait for a few more participants. Okay, great. So before I start very quickly, I would like to read a disclaimer for this event. Key investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The representations are not indicative of future results. All discussions are purely educational in nature and are in no way an advice or recommendation. Please understand that this is a pure academic program. We are going to learn different concepts. We are going to build skill. And today, our main speaker, trainer is Mr. Manish Shah. Manish Shah is, by qualification, he's a chartered accountant. वो chartered accountant है. He has got उनका more than 25 साल से भी ज़्यादा experience है market में. And वो both technical and fundamental analysis expert है. He does trade and actively he gives trading and investment ideas. So he has worked with many of the institutions, including broking institutions, financial institutions, in the research departments. So I welcome Manish. Manish, if you can open your camera. Okay, fantastic. Can you hear my voice, Hi Manish? everyone. Very good evening to all. नमस्कार सबको स्वागत है आप सबका इस श्रृंखला में और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत जानकारी मिलेगी आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी तो और बहुत बहुत डिटेल्स है ये काफ़ी ये जो सेशन है उसमें बहुत सारी डिटेल्स है हम लोग काफ़ी कुछ बात करने वाले हैं तो should we start? Uh, yes, Manish, we can start. Yeah. Yes. So I hope you can see this. You can see my presentation. Yes, Manish, we can see your presentation. Okay. Right. So just a second. It's okay. So I think you can see my screen. Basic of stock investing.
Yes. I think, Manish, to start with, I can see your Uh, screen. So you can give a overall idea about the market today. You can just draw a synopsis about how do you feel the market going ahead? How we have seen recently lots of volatility in the month of March and April, and after that it okay, stabilized. We are in an uptrend. Lots of recovery we have seen. let's So how do you see the market going ahead, Manish, to begin with? okay, let's fine. Okay, so let's start. We'll just take a quick look at Nifty, and I'll give my 2 cents on what is happening, and we'll just take a couple of seconds to load. Yes, there we have it. Okay. I hope you can see Nifty. Now, basically, what the price action that we are seeing here is that uh, it was a really sharp move up from April lows. We had a nice double bottom sort of a pattern. And somehow, despite all the good news that we have seen, okay, the market has gone in a range. It's not really moving up at a relatively sharp pace. Many reasons for that. We went through a very aggressive जो war scenario जो हुआ था. That is the reason why काफी time के लिए subdued था. Uh, this long green candle, जिसको candle समझ में नहीं आता है, please wait. We'll talk more about candles tomorrow. So there was this spurt after what that historical uh, डिसीजन दैट आरबीआई हैज टेकन जो जहाँ पे एक 0.5% का रेट कट किया है और उसके बाद सीआरआर कट भी हुआ है सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट डेटा आल्सो सजेस्ट दैट इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल इट इज एंड अभी आज कुछ देयर वर न्यूज़ रिपोर्ट्स दैट वी आर बिलो 3 so that's very good news for the economy as such we are expanding at a very fast rate the March quarter का जो growth GDP growth rate है it seems that it is about 7. A lot of sectors have gone up uh, in last couple of months. So I think we are out of the woods. In the long term, probably by Diwali, we should be making a new high. Again, please take it this with a disclaimer that this is just a projections. Markets may the scenarios might change uh, quite a bit. But as of now, what we are seeing is that Nifty has failed to move beyond 25,076, a minor resistance. So basically, I think we are going in this range of uh, 25 to around 24,500, 24,400 के नीचे ये जो range है ना, so we are going to go in this range for something. Okay, तो कल आई टॉक मोर अबाउट ट्रेंड एंड ट्रेंड रेंजेस तो उसका मतलब क्या होता है और इसे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं सो आई थिंक ओवर नेक्स्ट 2 or 3 days markets might be a little bit subdued buy on declines should be the strategy be very be very selective with what you traded इट्स अ स्लो मूविंग मार्केट ज़्यादा लीवरेज मत करना क्योंकि मार्केट्स में जो मूव्स आते हैं काफ़ी सडन है इट इज़ सी वी आर नॉट इन दिस सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो देखो ये है ना जो हम लोग ने अगस्त नॉट दिस सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो जहाँ पे बहुत ही क्लीन रैली है we are in this sort of a movement where the volatility has contracted the price moves are not really coming intraday moves are absent बहुत ही narrow range हो जाता है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं है कुछ दिनों से सी यहाँ पर तो आई वुड नॉट से दिस इज एन आइडियल सिनेरियो बट still we have to accept whatever the market gives us and move along with it. Okay, so that is my 2 cents on the market and okay, is that should we go on to the main presentation because we have a lot of yeah. So okay. So now yeah. So I think we go on to this. Neeraj, can you hear me? Can you hear me here?
Can you hear me? Manish, your voice is very low. What happened? Can you take the mic in front of you? Oh, one second. This, yeah. अभी How ठीक. is it now? Is it okay? It's better now. Yeah. So I hope I was audible when I was speaking. You can repeat few points. Yeah. Okay, fine. Okay, we'll just again go through it. Okay. So now what we have here is Nifty और क्या हुआ है इधर की we haven't seen a clean breakout. देखो यहाँ पे 25,100 का जो जोन था वहां पर क्लीन ब्रेकआउट नहीं है. टुडे द मार्केट जस्ट पॉप्ड अप एंड टुडे इट it's just sort of reversed. So my take is that in a short term we are going to go in this range of around 25,150, 25,200 से लेके करीब 24,400 तक. So maybe in next 1 or 2 days there might be a little bit of a drop. So if we see a drop down here, I would still be looking for reversal signals and a signal to go on the long side. So that is what the ideal strategy is, provided we see this. Alternately, if agar market यहाँ तक नहीं आता है, then I will look to buy this breakout above this swing high. Okay, stop losses could be somewhere in between the range that is around 24,700. But this market is not uh, a short selling market. This market condition जो है वो buy on declines है. It's a relatively slow moving market. तो हम लोग ये जो this type of trending action जो हमने suppose जो देखा था यहाँ पर उस टाइप का मूव नहीं है. We are in a very very slow moving slow uh, a, a relatively low volatility pace. Uh, Now today is 12th of June, so I think we have around 2 weeks before the June expiry comes in. The news flow is very good that we have seen in last couple of weeks. So RBI rate cut, inflation under control, uh, growth rates growing have gone through the roof. GST collection are very beyond. And जो बजट 2025 में जो सॉप्स दिए थे तो आई थिंक उसका इफेक्ट जो आएगा इट विल बी कमिंग नाउ. monsoon is also going to be very good, so I think news flow wise we are doing very well. It's a matter of time before the market starts to go up. Yeah. Okay, so should we move on to the main presentation? Yes, yes, Manish. Okay, fine. Yeah. So we'll have a Q&A session after this. Okay. Now, okay, I hope you can see the screen of basics of stock investing. Okay. So see, usually what happens is that काफी लोग जो markets में आते हैं, काफी लोगों को बेसिक्स जो स्टॉक इन्वेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में है ना उनको बहुत कम जानकारी रहती है. So stock market is not simply buying and selling stocks, right? So we are going to cover a lot of topics on in today. So maybe so right from what is meant by a stock share in a company to what is a stock exchange and so on and so forth. Uh, Interesting things will start from lesson 4, where we'll talk about what a stock market index is and why it is so important to follow different type of stock indices. Then we'll talk something about settlement process, and then different investment styles and so on, trading versus investment and so on. Okay, so let's start with the first topic, that what exactly is meant by a share. So now what happens is that देखो जब भी आप कोई शेयर लेते हो ना, सी आई एम टॉकिंग अबाउट डिलीवरी. ठीक है, मैं फ्यूचर्स के बारे में या ऑप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट डिलीवरी. तो डिलीवरी में क्या होता है कि जब भी आप कोई शेयर लेते हो, सो यू बिकम अ मेंबर, यू बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी. और उसका मतलब ये होता है कि जब जिस कंपनी में आप निवेश करते हो, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, अगर वो कंपनी ग्रो करती है, ओके, अगर वो कंपनी ग्रो करती है तो आपका स्टॉक प्राइस जो है वो भी अ, वो भी बुलिश होता है, वो भी ऊपर जाता है.
और इससे आपको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिलता है. Okay, so this is what happens when you remain with a particular company. काफी सारे examples है, you know, where we have seen, you know, companies, you know, really growing up over 10 or 15 years. तो और ये तभी ही मुमकिन होगा जब भी आप कोई कंपनी के मेंबर रहते हो. मेंबर मतलब आपको एक, यू आर अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी. तो पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी में जब भी आप रहते हो तो उसका क्या फायदा होता है? तो उसको आपको कुछ कुछ अधिकार मिलते हैं. बीइंग अ मेंबर ऑफ द कंपनी यू गेट सर्टेन राइट्स, यू कैन आल्सो हैव वोटिंग राइट्स. देयर आर कॉन्सेप्ट्स, यू नो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट. तो वो भी आपको मिलते हैं. आप वोट कर सकते हो, डायरेक्टर्स चूज कर सकते हो. उसमें भी आपका एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कौन से डायरेक्टर को चूज करते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो when you are owning a company, you are in fact owning a business. ओके, तो लेट्स से मेरे पास अगर 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख रुपया है, तो मैं कोई स्टील प्लांट तो नहीं डाल सकता ना, या तो कोई मैं ऑटोमोबाइल फैक्ट्री नहीं डाल सकता. तो मैं ये कहता हूँ कि भाई चलो, मैं मारुति या बजाज ऑटो के शेयर्स में मैं निवेश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से ऑटो इंडस्ट्री का भविष्य बहुत अच्छा है. इट इज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड ऑटो स्टॉक शुड गो अप. So instead of me setting up a plant, I would directly invest in a company, automobile company. There are a number of different companies. I can select one. I can create a portfolio. जो भी कुछ करना है, तो वो that happens when I become a part of the company. Okay, so that means you are becoming a member of the company. Okay, now अभी आपको किसी चीज का शेयर्स लेना है, तो आप कहाँ जाओ? ओके, तो ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज पे जाओगे. सो व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज? तो आप स्टॉक एक्सचेंज में ही क्यों जाते हो? आप और किधर नहीं? क्या आप अपने पड़ोसी को पूछ सकते हो कि भैया मेरे पास, आपके पास मारुति का शेयर है? या तो फिर आप अपने रिश्तेदारों को पूछोगे कि क्या आपके पास मारुति का शेयर है? नहीं, आप एक ही जगह जाते हो. तो बेसिकली कहाँ जाते हैं? मार्केट प्लेस. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट वी नीड इज अ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज नाम यही कहता है. स्टॉक मतलब यू आर बाइंग अ स्टॉक from an exchange. You are buying a stock through an exchange, which is a very important thing. तो स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है कोई भी एक देश की इकोनॉमी में, जहां पर जिन लोगों के पास पैसा है इन्वेस्ट करने को, और जिन लोगों के पास आइडिया है कि मुझे ये बिजनेस मुझे ये कोई भी बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो स्टॉक एक्सचेंज का काम ये है कि उस पैसे का ट्रांसफर करें. ओके, तो ट्रांसफर करने के लिए एक एक माध्यम चाहिए. व्हाट वी नीड इज अ मीडियम, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ स्टॉक एक्सचेंज. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी. ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ शेयर्स नहीं, और भी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं. बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स भी ट्रेड होते हैं, म्यूचुअल फंड्स जो हम डायरेक्ट स्कीम्स कहते हैं, इवन दैट दोज आर ट्रेडेड, ईटीएफ्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में. और आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहते हो वो इंडिविजुअल के ऊपर है. बट ये बेसिकली दैट इज व्हाट स्टॉक एक्सचेंज इज. तो स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटरी बॉडी भी है जहां पर मेंबर्स को भी रेगुलेट करता है, एंड सो ऑन. तो बाकी के बहुत सारे फंक्शंस है स्टॉक मार्केट के. सो व्हाट आर द बेसिक फंक्शन? सो हमें स्टॉक मार्केट में क्या क्या चाहिए? फर्स्ट थिंग इज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मतलब अगर आपको कोई शेयर लेना है, आपको 100 लेना है, 500 लेना है, 50,000 लेना है, तो आप जब भी उस मार्केट प्लेस पे जाते हो तो आपको अपनी क्वांटिटी मिल जाती है. That is the reason why it is called as stock exchange. They provide liquidity. Okay. अगर आपको बेचना है तो आप इमीडिएटली कोई भी स्टॉक में एक्सचेंज उसमें एग्जिट कर सकते हो. सो दैट इज ऑल्सो वाई यू नीड लिक्विडिटी. दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है स्टॉक एक्सचेंज का, वो है प्राइस डिस्कवरी. प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या कि अगर कोई, मान लीजिए रिलायंस जैसा कोई शेयर है, तो उसका सही प्राइस क्या है? हाउ विल यू? ओके, कोई आपको बताएगा कि भाई रिलायंस का प्राइस जो है मुझे तो 1600 चाहिए, कोई बोलेगा मुझे 1500 चाहिए. जैसे अभी हम देखते हैं ना, काफी सारे, अगर आपको पता होगा, अनलिस्टेड शेयर्स में भी प्राइसेस होते हैं. तो अनलिस्टेड शेयर्स में कोई बोलेगा भाई, अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल एनएसडीएल का बहुत ही बोलबाला चला हुआ है अभी.
कुछ समय से। तो कोई बोलता है 2200, कोई बोलता है 2250, कोई बोलता है 2300, सो अलग अलग प्राइसेस आपको अलग अलग जगह से मिलता है। जैसे कि मंडी होते हैं ना, तो अलग अलग प्राइसेस। बट स्टॉक मार्केट में क्या है, प्राइस डिस्कवरी। जैसे जैसे फंडामेंटल्स चेंज होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई इज व्हाट डिटरमिन्स द प्राइस। अगर कोई भी एक स्टॉक में अगर डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ेगा, अगर डिमांड कम है या सेलिंग ज्यादा है तो उसका प्राइस गिरेगा। तो प्राइस डिस्कवरी एक बहुत ही ये एक्यूरेट मेजर होता है द अंडरलाइंग वैल्यू का, विच कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन अ मिनट टू मिनट, डे टू डे बेसिस और वीक टू वीक बेसिस एंड सो ऑन। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्वेस्टर इंटरेस्ट। ओके, इन्वेस्टर इंटरेस्ट का मतलब क्या, स्टॉक एक्सचेंज आपको प्रोटेक्शन देता है कि जब भी आप कोई स्टॉक लेते हो आपको वही स्टॉक मिलेगा। अब अगर आप कोई स्टॉक बेचते हो तो आपको उसका सही दाम जो आपने ट्रेड किया है वो आपको गारंटी के साथ मिलेगा। ओके, अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हो कि मुझे रिलायंस के शेयर लेने हैं, लेकिन रिलायंस कौन सा, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, रिलायंस पावर भी है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो अगर आप किसी के पास जाते हो, मान लीजिए आपको पता नहीं है कि आप रिलायंस के और भी शेयर्स, आप किसी के पास जाते हो, वो आपको रिलायंस पावर के शेयर्स दे देगा जिसका प्राइस शायद 50 या 60 रुपया है। या आपको कह के देगा कि अरे ये तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, तो उसका तो भाव 1500 रुपया है, तो आप 1500 हिसाब से आप उसको पे करेंगे। आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं नहीं, मुझे तो रिलायंस पावर के शेयर्स मिले। तो ठगने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि काफी सारी गवर्नमेंट एजेंसी, सेबी, आरबीआई, दे ऑलवेज से दैट ट्रेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। जो स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज है, ओके, उसी के उससे ही ट्रेड कीजिए। काफी टाइम लोग अनरिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट्स में भी ट्रेड लेते हैं। तो उससे उनका पैसे का उनका जो इनके पैसे का जो खतरा है, जो रिस्क है उनकी संपत्ति का, वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, देन ऑलवेज ट्रेड थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जो है बीएसई, एनएसई, ज्यादा करके स्टॉक में एमसीएक्स, और वो भी है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए दूसरे एक्सचेंजेस भी है। बट हम बात कर रहे हैं स्टॉक्स की। तो ओनली ट्रेड थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एंड थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही ट्रेड कीजिए। डोंट गो टू एनी थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट जो रजिस्टर्ड नहीं है। Okay, so that is also an important function of the stock exchange. बाकी के अलावा भी अलग अलग फंक्शन है। फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, जिसका हमने एक थोड़े टाइम पहले कुछ डिस्कशन भी किया था कि बहुत इजी हो जाता है आपको बाइंग करने के लिए या सेलिंग करने के लिए। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडर है, तो आपको फैसिलिटेट करता है स्टॉक मार्केट। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप कर रहे हो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो आपको लिक्विडिटी चाहिए, आपको इमीडिएटली बाइंग एंड सेलिंग इमीडिएट बेसिस पे होना चाहिए। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ट्रेडर्स टू ट्रेड टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस। ओके, सो नाउ तो ये हुआ फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सो ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्यादातर लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखते हैं, ठीक? वो इंडेक्स को नहीं देखते, राइट? सो स्टॉक मार्केट के अलग अलग इंडाइसेस है। तो हमने कुछ समय पहले देखा था निफ्टी। तो व्हाट इज निफ्टी? निफ्टी इज अ लार्ज कैप इंडेक्स, मतलब जो इंडिया में बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। तो उसका एक इंडेक्स बनता है। अभी उसके अलग अलग तरीके हैं इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के लिए। तो लेकिन बेसिकली इट इज जस्ट अ स्टैटिस्टिकल मेजर। तो स्टैटिस्टिकल मेजर हमें क्या कहता है कि ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या है। तो कुछ समय पहले हम निफ्टी पे गए थे। सो लेट्स अगेन ओके, लेट्स अगेन गो टू निफ्टी। I'll just show you what is meant by index and why it is so important कि आप
Right, so let's again go to Nifty and okay, now what we are seeing here is Nifty, right? तो यहाँ पे क्या होता है, सी दिस इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो हमें क्या पता चल जाता है कि ओके, लास्ट 3 साल में बाजार क्या हुआ, लास्ट 5 साल में हिस्टोरिकली बाजार मार्केट में क्या हुआ, तो क्या ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या मुझे स्टॉक्स लेने चाहिए, अभी क्यों मुझे लेने चाहिए, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, मार्केट इज लाइकली टू गो अप, इसीलिए मुझे स्टॉक्स लेने चाहिए। या तो फिर हम कभी कभी लगता है कि मार्केट नीचे आने वाला है, तो मार्केट मतलब क्या, मार्केट मतलब it is nifty या sensex which is a broadly tracked market indicator। ओके, तो अगर स्टॉक मार्केट में ये भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इंडाइसेस दे आर अ बैरोमीटर, दे आर अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। ओके, ये डाउ जोन्स के टाइम से है, 150 साल पहले से ये बात निश्चित है कि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमी। ओके, सो दैट इज व्हाई यू नीड एन इंडेक्स। पहले जो इंडेक्स हुआ था डाउ जोन्स इंडेक्स, वो 150 या 160 साल पहले चार्ल्स डाउ ने बनाया था, बाद में रिफाइन होते गया एंड वी हैव नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडाइसेस। सो व्हाट कुड बी द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडाइसेस। ओके, सो लेट्स से हम अगर अलग अलग सेक्टर के इंडेक्स होते हैं, तो सेक्टर इंडेक्स आपको क्या कहता है। ओके, सेक्टर इंडेक्स ये कहता है कि आपका कौन सा सेक्टर परफॉर्म कैसे कर रहा है। ओके, तो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी इज अ सेक्टर दैट शोज परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल बैंक्स। तो अलग अलग बैंक्स हो जाता है, तो भी मुझे कौन सा सेक्टर लेना चाहिए, बैंक्स में लेना चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर लेना चाहिए या फाइनेंस लेना चाहिए, तो ये कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, राइट। तो उसका जो एक मापदंड होता है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ सेक्टर इंडेक्स। ओके, सो right, so this is what we call as a sector index। यहाँ पर आप देख रहे हो, it is called as a sector index। So indices can be based on market cap, overall market। तो निफ्टी is not a sector index, वो क्या है, broad market index है। ओके, बैंक निफ्टी क्या है, सेक्टर इंडेक्स है। ऑटो इंडेक्स क्या है, इट इज इट शोज यू ऑटोमोबाइल स्टॉक्स। तो उसमें ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में इंफोसिस आईटी स्टॉक्स नहीं आएंगे इंडेक्स में। हाँ, निफ्टी में आ सकता है, क्यों, क्योंकि वो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है। तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स आपको ये भी कहता है कि ओवरऑल मार्केट के बाद अगर आप सेक्टर इंडेक्स और ब्रॉड मार्केट इंडेक्स देखते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में भी कौन से सेक्टर बुलिश है या तेजी की तरफ है, कौन से सेक्टर मंदी की तरफ है, राइट। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर मैं आपको हिंट देता हूँ, इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर in first 10-15 minutes of the market open, you should have an idea which sector is going up today and which sector is not is bullish today, which sector is bearish today। कल की बात करें तो कल ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपका बीपीसीएल, ओएनजीसी एंड उसमें एक अच्छा खासा रनअप आ गया। उसके पहले जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी, तभी रियलिटी स्पेस में या इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स में आ गया। तो इफ यू आर समबडी हु इज लुकिंग एट अ मार्केट ऑन अ डे टू डे रेगुलर बेसिस, और इवन इफ यू आर समबडी हु इज लुकिंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, जिससे हम थीमेटिक फंड्स कहते हैं, तो उसी के लिए भी आपको सेक्टर इंडेक्स देखना जरूरी है। ओके, और तीसरा कैटेगरी रिलेटिवली रीसेंट कैटेगरी है, उसे हम कहते हैं थीमेटिक इंडाइसिस। तो थीमेटिक इंडाइसिस क्या करते हैं, वो एक थीम लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग अलग इंडस्ट्रीज आती है, स्टील आता है, मेटल्स आता है, तो दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेटल इंडेक्स जो है दैट विल ओनली टॉक अबाउट मेटल कंपनीज। थीमेटिक इंडेक्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल डिफेंस, तो डिफेंस इज अ थीमेटिक इंडेक्स। तो अभी कुछ समय पहले काफी सारे डिफेंस के ईटीएफ्स आए थे। ओके, तो वो दे आर एग्जांपल ऑफ थीमेटिक इंडाइसेस। तो अगर आप थीमेटिक इंडाइसेस भी देखते हो, अगर आप ईटीएफ भी फॉलो करते हो, तो थीम्स कौन से थीम जनरली बेटर चल रहे हैं, तो सो वी कैन से दैट थीमेटिक इंडेक्स इज अ रिलेटिवली ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, जिसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज भी आ सकती है। सेक्टर इंडेक्स रिलेटिवली नैरो कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये नैरो कॉन्सेप्ट जो है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे आता है, और सबसे ब्रॉड है वो है मार्केट इंडाइसिस,
निफ्टी 200 है, निफ्टी 500. निफ्टी 500 इज अ वेरी ब्रॉड मार्केट इंडेक्स. ओके, तो उसमें आपको एक मार्केट का ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर दिखता है. निफ्टी इज डे टू डे मॉनिटरिंग ऑफ द मार्केट, जहां पर हम 1 2 3 4 5 दिन का व्यू हम लोग बनाते हैं ओवरऑल मार्केट्स के लिए. बट अगर लॉन्गर टर्म व्यू आपको देखना है, देन यू कैन गो टू निफ्टी 500. तो ये हुआ इंडेक्स के बारे में, राइट. तो अभी स्टॉक मार्केट इंडेक्स के इसकी उपयोगिता क्या है? फर्स्ट इज मार्केट डायरेक्शन. जैसे हमने एक मार्केट का अनुमान लगाया, वो हमने क्या देखा? निफ्टी देखा. ओके, सो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन. ओके, दूसरा जो अभी काफी समय हो गया इसके, रिटर्न्स कंपैरिजन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स. ओके, तो आपको कैसे मालूम कि आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है? तो अलग अलग टाइप के भी इंडाइसेस होते हैं. ओके, तो बॉन्ड इंडेक्स भी होते हैं, फिर आपका तो कमोडिटी इंडाइसेस भी, सीआरपी इंडेक्स है, दैट इज दोस आर आल्सो कमोडिटी इंडाइसेस. तो ये जो होता है, दैट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स. तो लार्ज कैप इंडेक्स, तो अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हो तो एक जब भी जो जो फैक्ट शीट आता है उसमें ये कहता है कि हमारी स्कीम ने ऐसा परफॉर्म किया, इसके मुकाबले निफ्टी ने इतना रिटर्न दिया, या लार्ज कैप इंडेक्स ने इतना रिटर्न दिया. अगर वाकई ही स्मॉल कैप इंडेक्स है तो आप उसको निफ्टी से कंपेयर नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जो मिड कैप इंडेक्स है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है, स्मॉल कैप इंडेक्स होता है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है. तो कभी कभार स्मॉल कैप इंडाइसेस जो होते हैं वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज. तो as compared to large cap indices. So it is very very important to know, to compare कि आपकी कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही है. ओके, फिर चौथा उपयोगिता है हेजिंग का. हेजिंग मतलब क्या? अभी हेजिंग मतलब टेकिंग एन ऑपोजिट पोजिशन इन द सेम इंस्ट्रूमेंट. तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हेजिंग कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी भी उतना प्रचलित नहीं है. डेवलप मार्केट्स में, यूएस में, यूरोप में बहुत ही प्रचलित है, जहां पर मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट नीचे आने वाला है. ओके, और मुझे लगता है ये जो मार्केट में डिक्लाइन आने वाला है वो कुछ समय के लिए रह सकता है, शायद 1 महीने के लिए या 2 हफ्ते के लिए. कि जैसा हमने देखा, हमें लगा कि लास्ट 4 5 दिन के लिए मार्केट नीचे आ सकता है. तो ऑब्वियस ये है कि मेरा जो स्टॉक का पोर्टफोलियो है, मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, उसकी भी वैल्यू डिटीरिएट होगी. तो उसको मैं प्रोटेक्ट कैसे करूं? बाय टेकिंग अ हेज. तो हम क्या करते हैं कि अगर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है तो उसको आप हेज कर सकते हो. यू कैन सो इट इज थियोरेटिकली पॉसिबल कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से कुछ समय के लिए नीचे जा सकता है, कुछ समय के लिए बेरिश हो सकता है, तो आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आप निफ्टी में ऑपोजिट ट्रेड ले सकते हो. ओके, तो दैट इज द रीजन व्हाई वी यूज हेजिंग. ओके, ईटीएफ्स में भी काफी अभी चर्चा हो रही है, आई डोंट नो कभी होगा कि नहीं. देयर शुड बी ऑप्शंस ऑन ईटीएफ्स आल्सो. कि आप मान लीजिए आपने गोल्ड का ईटीएफ लिया है, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ समय के लिए गोल्ड नीचे आएगा, तो मैं ऑप्शंस में मैं पुट बाय कर सकता हूँ इस. और अगर वाकई ही गोल्ड की वैल्यू डिटीरियोरेट होती है तो मेरा पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट रहेगा. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हेजिंग. ओके, फिर और लास्ट में रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन. रिलेटिव स्ट्रेंथ कम, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है. तो अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट बढ़ सकता है, तो मार्केट के हिसाब से कौन सा इंडेक्स बेटर परफॉर्म करेगा, तो मैं अगर वो इंडेक्स में सिलेक्ट करता हूं तो ऐसा पॉसिबल है कि मोमेंटम जो है वो वो रिलेटिवली स्ट्रांग मिलेगा मुझे. तो देखिए अभी मैं आपको फिर से मैं इंडेक्स पे लेके जाता हूँ. आई जस्ट शो यू व्हाट इज मेंट बाय okay, see bank index, see where is bank index? Bank index has made a 52-week high. Okay, so now as compared to bank nifty, let's now
look at IT index, right? So now what we have IT index. See, IT index is just recovering. So now अगर निफ्टी यहां से बुलिश होता है, मान लीजिए 25,000 का निफ्टी अगर 3 4 6 महीने में 27,000 हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव टर्म्स आई विल गेट अ बेटर रिटर्न इन बैंक निफ्टी as compared to IT index. Why? Because Bank Nifty right now is an outperforming index. See, it is an outperforming index as compared to IT sector. Okay. Again, this is a very advanced concept. ये जो concept जो मैंने अभी आपको बताया relative strength का, that is used by momentum mutual funds. Momentum मालूम, अब हम लोग कहते हैं कि momentum mutual fund. So that is a part of momentum investing. Okay, we'll talk about momentum investing in some time. So that is the reason why we need a stock market, with different type of stock market indices. It is a very very big business. Okay, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस का एक बहुत बड़ा बिजनेस है. MSCI इंडेक्स के लिए इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब करना पड़ता है. अगर आप डेटा वेंडर हो और NSE से अगर डेटा लेते हो तो आपको उसके लिए यू हैव टू पे एडिशनल चार्ज फॉर दैट. सो डेटा हम कहते हैं ना, डेटा इज अ गोल्ड माइन. सो फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, डेटा ऑफ इंडाइसेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो, यू शुड बी लुकिंग एट NSE का वेबसाइट कि नए नए इंडेक्स कौन से आए हैं. तो रिसेंटली कुछ समय पहले डिफेंस सेक्टर का इंडेक्स भी लॉन्च हुआ है. ओके, सो you should be looking at all different indices to make a judicious investment decision. Okay, right. So let's go back to our screen and then we go. Right. So this is something on stock market index. Very very important concept to apply it in your day-to-day investments, in your day-to-day trading, whatever जो भी आप करते हो. So now, okay, now we'll talk about some key terminologies, right? So key terminologies again a very very basic but important concept. So जब भी हमने किया था ना, मैंने जब भी आप किसी भी कंपनी के मेंबर बनते हो, when you own a shares of a company, आप जब भी फ्यूचर्स लेते हो ना, you don't become an owner of the company. Why? Because it is a derivative instrument. We'll talk about that when we talk about derivatives. Okay, so first is what do you get? Price appreciation. अगर प्राइस बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है. बोनस, तो बोनस क्या होता है? बोनस इज तभी कोई कंपनी उसको कहते हैं प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज किया. देखो, कंपनी जब भी मुनाफा करती है तभी आइदर डिविडेंड्स दे सकती है या तो फिर कुछ. तो डिविडेंड देती है तो कंपनी में क्या होता है? कंपनी में से कैश निकल जाता है. ओके, कैश निकल जाता है तो अगर कंपनी क्या करेगी? वो बिजनेस में डिप्लॉय करेगी. ओके, तो काफी टाइम क्या होता है कि अ, अगर कंपनी का ओवरऑल, जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ओके, जनरल रिजर्व में वो जाता है. तो अगर शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देना है तो कंपनी बोनस इश्यूज डिक्लेयर करती है. तो बोनस इश्यू में क्या हो जाता है? आपके पास जो शेयर है वो उस प्रपोर्शन से बढ़ जाते हैं. तो मान लीजिए अभी फिलहाल फॉर एग्जांपल बजाज फिनसर्व में बोनस इश्यू हुआ था. लेट्स से कोई एक कंपनी 1:1 आपको बोनस शेयर देती है, तो क्या होगा? उसका जो प्राइस है वो आधा हो जाएगा, लेकिन अ, आपको उतने, आपके पास जो शेयर है वो डबल हो जाएंगे. सो अगेन उसमें अलग अलग टाइप के रेशियोज भी होते हैं, बट टू पुट इट सिंपली, हम लोग 1:1 के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको एक शेयर है, आपके पास 100 शेयर है, तो आपको बोनस मिलेगा 100 शेयर. तो यू कैन ओनली गेट दिस इफ यू आर अ मेंबर ऑफ द कंपनी. ओके, सो तो आपको राइट होता है, आपको आपका एक हक होता है कि आपको अगर कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है तो आपको आपको बोनस शेयर्स मिलता है. कुछ समय पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी बोनस इशू हुआ था, शायद 1 1.5 साल पहले की बात है. विप्रो, इन्फोसिस, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोनस शेयर्स इशू किए हैं. तो ये जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जाती है, जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर होते जाता है, तो उसका प्राइस बढ़ता है और आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन आपको ज्यादा ज्यादा शेयर्स मिलते जाते हैं.
So bonus issues so this is what we call as bonus shares. Okay, then you have dividends. Okay, dividends भी अलग, बेसिकली यू हैव स्पेशल डिविडेंड्स. कभी कभी कोई कंपनी ने अपना एक बहुत बड़ा एसेट अगर बेच दिया, वो एक स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, या तो फिर स्टेडी डिविडेंड स्ट्रीम भी आता है. तो काफी ऐसे सारे स्टॉक्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोल इंडिया है, जो जिसका जो डिविडेंड यील्ड है, आपका प्राइस के हिसाब से जो डिविडेंड आता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है. कम से कम 8, 10, 11% का यील्ड होता है. दूसरा एक डिविडेंड यील्ड आता है रीट्स में, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह में, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा यील्ड मिलता है. सो इट इज बेटर देन एफडी, इट इज अ सेफ बेट. तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल डिविडेंड यील्ड के लिए भी शेयर्स बाय करते हैं. तो जब भी प्राइस, लेट्स से कोई कंपनी जो अच्छा डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे डिक्लेयर करती है, जो मेरा इमीडिएटली जो ध्यान में आ रहा है कोल इंडिया, तो 10-12% यील्ड आता है. कभी कभी मार्केट जब भी गिरता है तो ये डिविडेंड यील्ड है ना, वो 12, 15, 16% तक भी हो जाता है. ओके, सो सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिविडेंड. सो ये आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है काफी लोगों के लिए. तो डिविडेंड्स आपको मिलता है. एंड फाइनली राइट्स. राइट्स का मतलब क्या होता है, जब भी कोई लिस्टेड कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, तो सबसे पहले क्या करता है, वो जाता है अपना मेंबर्स के पास, जो शेयर होल्डर्स है उनके पास जाता है कि भाई हमें पैसे की जरूरत है. अगर आपके पास 100 शेयर है तो हम आपको 100 शेयर ज्यादा देंगे, लेकिन उसका एक प्राइस होगा. कभी कभी एग्जिस्टिंग प्राइस से शायद थोड़ा कम होता है, कभी कभी एट पार होता है. सो दिस इज यू गेट एज अ राइट्स शेयर. अभी तो अलग से राइट शेयर भी लिस्ट होते हैं. बीच में भारती ने एक बहुत बड़ा राइट्स इश्यू निकाला था जो फुली सब्सक्राइब हुआ था. और राइट्स इश्यू आने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली सारा का सारा पैसा आपको पे करना होता है. वो लोग आपको कहते हैं कि भाई अगर आपको राइट्स है तो उसका 25% अभी दे दो, दूसरे 25% 2 साल के बाद आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दीज आर rewards for shareholders. So these are important terminologies that we have. Okay. On when it comes to stock market investments. Okay. मनीष, Settle, yes. यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस हैं. हाँ जी. आई थिंक एक पार्टिसिपेंट्स ने भी पूछे हैं कि हाँ ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, उसका ऊपर हाँ. बेस करके कैन यू यू नो क्रिएट सम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज. अगर कोई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, किस किस तरीके का स्टॉक्स है. सेकंड थिंग इज दैट आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, कैन समबडी, और एसएमई आईपीओ का ऊपर भी पूछे हैं चंद्र प्रकाश मौर्य ओके ने. ओके. हाँ. तो एक इसका ऊपर आंसर दीजिए ना. ओके ओके. सी, डिविडेंड इन्वेस्टिंग बाय इटसेल्फ भी एक फॉर्म है इन्वेस्टमेंट का. ओके, इट इज डन बाय पीपल हु आर वेरी वेरी कंजर्वेटिव इन देयर अप्रोच. So yes, you can include dividend stocks, high paying dividend stocks in your portfolio. आप कर सकते हो, खास करके पीएसयूज को एक मैंडेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप जितना हो सके उतना ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कीजिए. सो यू फाइंड स्टेट बैंक्स एंड कोल इंडियाज एंड दे गिव वेरी गुड डिविडेंड्स. सो यस, इट कैन बी अ वायबल स्ट्रेटेजी. आप डिविडेंड्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हो, या तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें से कुछ, उसका कोई एक कुछ पार्ट, कुछ अंश जो है वो आप डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो. तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, उसमें से अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट करके आप उसमें निवेश कर सकते हो. काफी लोग डिविडेंड स्ट्रिपिंग भी करते हैं कि जहाँ पर एक्स डेट होने वाला है, कोई एक्स डिविडेंड का एक डेट होता है, तो यू हैव जैसे ही एजीएम खत्म होता है तो डिविडेंड डिक्लेयर होता है. तो डिविडेंड डिक्लेयर होने पर और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होने पर एक कुछ समय मिलता है. ओके, तो स्टॉक प्राइस होता है वो कम डिविडेंड होता है. जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उतना प्राइस में से वो डिविडेंड माइनस हो जाता है. तो काफी लोग, अच्छा डिविडेंड आता है तो कुछ समय के लिए वो डिविडेंड लेने के लिए वो शेयर्स के मेंबर बन जाते हैं. एंड बट देन अगेन देयर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस, बट दिस इज व्हाट is done in highly paying dividend stocks. Vedanta is a prime example. 4, 3, 4, 5 dividends a year, very very good dividend yield. So yes, it can be a strategy. Okay.
There was a question on IPO for SMEs. Personally, I don't look at SMEs as such. There can be a very, very volatile movement in SMEs. I would prefer to be in IPOs, but again, you can do your own research. If you find that an IPO is good, you can go for it. But personally speaking, I don't recommend and I don't even analyze SME ka IPOs, right? So it can be very volatile. Small companies, they can be easily be manipulated. So no, in good market conditions, a lot of companies can go up provided you get the. No, but I think the lot size is also much higher as compared to your normal IPO. So if you have बहुत अच्छा आइडिया है आपको कोई एसएमई वाकई अच्छा लगता है देन यू मे गो फॉर इट बट डू इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आई वुड से बिकॉज इट कैन बी वेरी वेरी वोलेटाइल एट टाइम्स या ओके सो आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस Yes, I think there are some more questions, but we'll take ओके those questions at the end. Chandra Prakash Maurya ji ने पूछे हैं कि कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए at this point of time. So we can take those questions, I think, towards the end, Chandra Prakash ji. So let's continue, Manish. ओके Yeah. राइट सो नाउ सेटलमेंट प्रोसेस ओके देखिए स्टॉक मार्केट एक ऐसी ही जगह है जहां पर आपको डॉट टाइम पे आपका पैसा मिल जाएगा ओके अगर आप कोई जब भी कोई शेयर्स बेचते हो तो आपको गारंटी है कि विद इन नेक्स्ट 1 और 2 डेज तो T+1 और T+2 T+1 मतलब क्या कि आज आपने ट्रेड लिया है उसका नेक्स्ट डे आपको आइदर डिलीवरी लेनी पड़ेगी और आपको जो जो भाव में आपने खरीदी की है वो आपको नेक्स्ट डे को आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए या तो फिर आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में वो ट्रांसफर करो okay so it happens on the next day not all the stocks are in T+1 settlement काफी stocks जो है वो T+2 settlement में भी है मतलब T+2 days okay so that is T1 plus T2 that is the basic settlement process usually once you take in a trade so in a lot of software platform you have something that is written as T+1 because अगर T+1 नहीं है तो T+2 में तो कवर हो ही जाता है ओके नाउ द पॉइंट इज कि अगर आपने कोई शेयर लिया है और अगर आपको डिलीवरी नहीं आती देन व्हाट हैपेंस एक्सचेंज इज ड्यूटी बाउंड टू गिव यू द शेयर्स इफ फॉर सम रीजन अगर शेयर सामने से डिलीवरी नहीं आई देखो स्टॉक मार्केट एनएससी बीएससी दे आर ऑर्डर ड्रिवन मैकेनिज्म आपने आप कभी कोई शेयर ले सकते हो जब भी आपको कोई सेलर है तभी तो मैंने अगर 500 शेयर रिलायंस का लिया है तो सामने कोई बेचने वाला होना चाहिए अगर जिसने मुझे शेयर बेचा है वो अगर डिलीवरी नहीं दे सकता है देन व्हाट हैपेंस तो उसके लिए स्टॉक मार्केट का मैकेनिज्म है उसे कहते हैं क्लोज आउट वेरी कॉम्प्लेक्स इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक टू स्टॉक बट अगर आपको डिलीवरी नहीं मिलती देन यू विल बी कंपेंसेटेड फॉर इट तो क्लोज आउट में कभी कभी आपको एक जो सेलर होता है उसे बहुत बड़ी पेनल्टी लगती है पार्ट ऑफ दैट पेनल्टी इज ट्रांसफर टू द बायर तो अगर आप कोई शेयर बेचते हो प्लीज सी टू इट कि आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स है और उसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती जब भी आप शेयर्स बेचते हो क्योंकि अगर वो क्लोज आउट हो जाता है तो यू कुड एंड अप पेइंग अ पेनल्टी ऑफ 20% और देयर अबाउट इफ यू डोंट गिव डिलीवरी ऑफ द शेयर तो काफी बार क्या होता है कि आपने कोई शेयर बेच दिया भाई 500 शेयर मैंने बेच दिया लेकिन आपको मालूम पड़ता है अरे मेरे पास तो सिर्फ 300 ही शेयर है तो 200 शेयर का जो है उस पे आपको या शॉर्टफॉल जो कहते हैं उस पे आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है तो गाइज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू सेल योर शेयर्स कि आपके डीमैट अकाउंट में अगर आपका अलग अलग ब्रोकर में है तो क्या आपके उस ब्रोकर में उसके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स है कि नहीं है नहीं आपको unnecessarily you may have to pay a very big price for this okay so that is why settlement process is important okay right so let's yeah now we come to a very very interesting topic this is guys this topics are huge by itself okay value investing growth investing these are styles of investing okay
अभी स्टाइल ऑफ इन्वेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। ओके, आपको कौन सी स्टाइल लेनी है, आपको कौन सा स्टाइल इन्वेस्ट करना है, दैट डिपेंड्स ऑन how you want to approach the market. Okay, there is no such thing as the best style. It is the style that is comfortable to you, that is good for you. You approach the market in that fashion. Okay, so first and foremost is value investing. Okay, uh, okay, these are by itself, they are wide topics. We can have an entire workshop based only on value investing. We can have an entire workshop based only on growth investing. Okay, so now what is value investing? Okay, first thing first, value investing का मतलब क्या है? आप वो ही स्टॉक को देखो, राइट, जो जिसमें एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ओके, सो यूजुअली दे आर लार्ज कैप्स, वो जो स्टॉक्स है वो लार्ज कैप्स है। एंड इन अ मार्केट डिक्लाइन, जब भी मार्केट में एक गिरावट आती है, तो ये जो हाई वैल्यू गुड क्वालिटी कंपनीज है, दैट यू गेट इट फॉर a relatively attractive and a competitive price. Okay, so let's say, for example, let's go back to our. Okay, now let's look at something. Let's look at a very known stock, right? Let's say let's take a look at TCS. Okay, so now, uh, so TCS, as we know, is a fundamentally very strong company, right? तो एक बहुत ही strong company है, and if you see price movement in TCS over, let's say, 15-20 years, okay, 10 years, so 1529 to 10 years. Now, what is the first thing that you notice? Okay, the first thing that you notice is that these companies, ये काफी लंबे समय तक they keep on making new highs. Okay, स्लो मूवमेंट होता है बट श्योर। ओके, आज नहीं तो एक साल के बाद तो भाव मेरा आएगा ही। टीसीएस में कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है भाई, इट इज अ वेरी गुड कंपनी, रीजनेबली ग्रोइंग एट अ रीजनेबल पेस, गुड मैनेजमेंट। तो टीसीएस, इन्फोसिस, बहुत सारी कंपनीज है ऐसी। सो व्हेन you find that in a market decline, see, in a market decline, when the price falls, this becomes a value buy. Okay, so value buy by definition, it is a long term investment strategy. It is not suitable for everyone. Why? Because you may have to, अगर आप यहाँ लेते हो तो आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि शायद 6 महीना, 1 साल, 2 साल आप इसको होल्ड करके रखो। ओके, तो काफी लोग में ये पेशेंस नहीं होता है। तो somebody, the greatest value investor of our generation, Warren Buffett, he could hold on to his stocks for years, not even years, he could hold it for decades. Something like his investment in Coca-Cola, 40 साल से उसके पास ये स्टॉक है। That is a value style, it is an investment style. Okay, so value investing, you only go for large big companies और fundamentally very sound, कि जहाँ पे डेट बहुत कम है, steady growth है बिजनेस में, बिजनेस इज प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन है। So these are the stocks that you look at for value investment. They may or may not be momentum plays, it depends, पर लेकिन ज्यादातर मोमेंटम प्लेज नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज है। तो आप ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जिसको आप, वैल्यू कभी आएगा, वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, व्हेन द प्राइस इज रैली, इट इज नॉट अ वैल्यू, व्हाई, इट इज एक्सटेंडेड, तो कुछ समय के बाद ये वापस नीचे आएगी। ओके, इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि जो काफी सारे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो भी काफी इन्वेस्टेड होते हैं इसमें। व्हाई? बिकॉज लार्ज कैप स्कीम्स में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई कि वंस प्राइस कम्स डाउन टू अ वेरी अट्रैक्टिव लेवल, then your investment process starts. So value investing by definition क्या होता है? It is a contrary investing method. मतलब अगर मार्केट जब भी बहुत नीचे आ गया है, मार्केट जब भी काफी गिर गया है, तो वैल्यू इन्वेस्टर्स वो एक
देन दे बिकम एक्टिव कि अरे चलो भाई मार्केट अभी 4-6 महीने से नीचे आ रहा है, 1 साल हो गया, 8 महीने से नीचे आ रहा है, कौन से स्टॉक्स मुझे अच्छे वैल्यू पे मिल रहे हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स के भी अलग अलग पैरामीटर्स है। तो मोस्टली व्हाट वी हैव इज समथिंग कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो पे क्या होता है कि जब भी वैल्यू स्टॉक्स में प्राइस अर्निंग रेशियो है वो काफी नीचे आ जाता है, 3 साल 2-3 साल का जो एवरेज है उसके नीचे आ जाता है। सो सी सी नाउ टीसीएस का जो पीई रेशियो है दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू 2 और 3 years। देखो आ गया ना। ओके, सो शायद मे बी अगर if price comes down to this zone, P comes down to around 20-21, it can give you a good buying opportunity। तो इसमें क्या करता है जो लार्ज इन्वेस्टर्स है ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता में उसको एक्यूमुलेट करता है। मतलब अभी अभी का प्राइस है 3,300, तो वहां पर थोड़ा लेंगे, और थोड़ा नीचे आता है तो और थोड़ा ऐड करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली ये और 10-15% से नीचे नहीं जाएगा। लेकिन यहां से अगर मुझे 2-3 साल में अच्छा रिटर्न मिलता है, 4 का 5,000 6,000 हो जाता है, तो आई विल गेट अ रिटर्न ऑफ 20-30-40% इन अ ईयर, which for conservative investors it could be a good rate of return। Okay, so so that is what this is the concept behind value investing। ठीक है, सो आप बुक वैल्यू देख सकते हो, डिविडेंड यील्ड देख सकते हो, कंपनीज में डेट कितना है, देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स दैट यू लुक एट कंपनी। तो ये क्या है बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है कि कंपनी के शेयर की क्या वैल्यू होनी चाहिए, उस हिसाब से आज की तारीख में उसकी क्या वैल्यू है। So that is what is the concept of value investing। Okay, a beautiful concept। अगर आप में वो पेशेंस है, सी वैल्यू इन्वेस्टिंग इज मोर अबाउट पेशेंस। इवेंचुअली देखो 25 साल हो गए मुझे मार्केट में, इवेंचुअली वॉट एवर गोज अप वो कभी ना कभी, आज नहीं 4 नहीं 6-8 महीना के बाद वो फिर नीचे आएगा। एंड जो आज ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो मे बी समवेयर डाउन द लाइन, या फिर जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो देन समवेयर डाउन द लाइन इट विल स्टॉप। ओके, सो सेंटिमेंट इंडिकेटर्स आल्सो प्ले सम रोल कि मार्केट में किस तरीके का सेंटिमेंट आ गया है। सो यू कैन लुक एट वैल्यू investing। So it is not necessary that you will find good quality super quality companies only in large cap। आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में भी मिलेंगे, बट शर्त यह है कि कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनएल की क्वालिटी एक्सेप्शनल होनी चाहिए। शुड हैव अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट का क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ज्यादा डेट नहीं चाहिए बुक्स पे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो एकदम नॉमिनल अमाउंट्स पे होना चाहिए। मार्केट में गिरावट आने के बाद मैं इसमें तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जब भी ऊपर होता है तो ये स्टॉक्स भी ऊपर रहेंगे, तो देन इट डजंट बिकम अ वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट। So value investing concept will only start after a prolonged market decline। Okay, a very very important concept to learn if you are long term investors, if you are looking at uh, you know इन्वेस्टमेंट इन गुड क्वालिटी कंपनीज। तो गुड क्वालिटी कंपनीज का एक फायदा मालूम क्या होता है कि इवेंचुअली दे विल कीप ऑन मेकिंग न्यू एंड न्यू हाइज। अच्छी क्वालिटी कंपनी है तो ये टीसीएस जो है आज नहीं 1 साल नहीं 2 साल नहीं, कभी ना कभी तो मार्केट में ये प्राइसेस विल गिव यू विल मेक अ न्यू हाई। ओके, स्मॉल कैप मिड कैप का वो गारंटी नहीं है। तो जो एक जमाने में जो है हम कहते हैं ना कि एक जमाने में जो सिकंदर थे वो नेसेसरी नहीं है कि नेक्स्ट बुल मार्केट में वही स्टॉक्स फिर ऊपर आए। ओके, तो बट दैट इज द रीजन व्हाई ये काफी लोग ये कहते हैं कि ऑलवेज स्टिक टू गुड क्वालिटी स्टॉक्स। ओके, सो दैट इज समथिंग ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि मैं वैसे ही स्टॉक सिलेक्ट करूंगा, ओके, कि जो इंडस्ट्री के हिसाब से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ओके, ज्यादा उनका जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा फास्ट है। सो दे आर
growth stocks invariably will have higher PE multiples because the growth is very strong. So let's say, for example, if I am talking something about, let's look at a growth stock. Can you see this trend line ka? Like, see, Yes, Manish, can see. yeah, see. Now let's say, for example, this is not a recommendation. Okay, this is just this I'm trying to show you a concept, explain you a concept. Okay, so Suzlon, if we just take some time, yeah, so Suzlon Energy. Okay, so what we are looking here is, let's say we'll talk about financials, और हम जाते हैं yearly finance. Okay, now you see this CAGR in Suzlon, it is at incredible 75%. See this? Okay, right. ये TTM इसको ignore कर दो. Look at this. See, top line is growing at a very rapid pace. Let's look at consolidated numbers. Okay, see this? It is growing at a, see this. देखो, Suzlon में consolidated is growing 20-30%. Very high growth of it. Okay, see, look at now. Look at the see PAT. Okay, net profit. See, it is now. See this 28, 2.8. This is in. I think this is in. Okay, the crores. See, now look at this. See how volatile the 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 profitability is. देखो 28 का 660 आ गया, उसके बाद 20. See this, it's very volatile. Okay, but now compare this with something like TCS. See, now see TCS में क्या होता है? We'll also look at see this financials, how they behave. It's not about being right or wrong. It's about being what is the type of instrument you want to get in. See, now look at this. This consolidated TCS number. It's a huge, humongous number. Na? देखो, almost. Yeah, so this is annual. I hope you can see this. See this very steady growth of rate. See, it is not like Suzlon, not very fast. बराबर. तो इट्स अ वेरी स्टेडी रेट. तो आप रिलायंस देखते हो, आप आईसीआईसीआई बैंक देखते हो, दे आर वेरी स्टेडी मूवर्स. आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, दे कीप ऑन जस्ट गोइंग अप slowly and steadily expanding because the size is so big they cannot grow at 50, 60, 70%. Okay, so see, अगर पैट देखते हैं, then also it is at a very steady increase. Okay, 10% increase, 15%, कभी कभी 6-8% नीचे आ गया. So that is the reason why you see this volatility in price movements, right? So if you compare the steady growth in TCS and with a, right, see, Suzlon saw a decline of almost from 50% from the highs, but you will rarely see a decline of 50% of 50 from a 52-week high in something like Infosys or Reliance, unless the market is in a really bad shape. अगर इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा खाना खराबी आएगी ना, तभी ये बड़े स्टॉक्स है ना, दे विल सी अ वेरी शार्प डिक्लाइन. नहीं तो व्हाट हैपेंस इज दैट दे विल दे विल शो अ रिलेटिवली स्लो डिक्लाइन. तो जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हो, तो पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी कितनी चाहिए आपको? डू यू वांट योर पोर्टफोलियो टू बी अ स्टेडी गेनर, or do you want it to be a fast mover? Or market खराब मार्केट में you will find that suddenly your portfolio value drops like crazy. अरे मेरा पोर्टफोलियो तो 40% डाउन है, 50% डाउन है. ओके, ये क्यों होता है? बिकॉज द स्टॉक्स दैट यू हैव सिलेक्टेड, they are either very highly volatile in nature. Okay, so that is the reason why you should have this different types of investing strategies. ये आपको अभी ये कौन सी बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज है, वो that depends on your risk profile. So we'll also talk about risk profile after some time. Okay, momentum investing talks about very fast moves. तो आप जो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि
certain stocks that are moving at a very, very fast pace. So it is likely that in this phase, something like Suzlon would be a momentum investment कि जहां पर काफी तेजी से भाव बढ़ रहा है. Let's say, okay, so you can have a reasonably good company. For some reason, it is moving at a very fast pace. See, let's say, for example, let's talk about uh, City Union Bank, right? See, City Union Bank, you see, it is one of the best performers in the banking sector. Okay, in terms of price gains, तो price जो बढ़ा है ना लास्ट 3 4 6 महीने में, तो उसमें ये बेस्ट परफॉर्मर है. But if you see the fundamentals, they are not really so strong. Okay, see, City Union Bank, it is one of the fastest moving stocks in the entire banking sector. See, it is just about its all-time highs. It is breaking out, so relatively fast move. Relatively, yeah. See here, in this phase, City Union Bank was at a very fast mover. So relatively high PE ratio. Suzlon का जो PE है ना, that can go above 100. Something like Apollo Hospitals. For donkey's years, the PE is always expensive, more than 70-75%. Why? Because it is a high growth stock. ओके, मोमेंटम और लेकिन उसमें क्या होता है कि देखो इश्यू क्या होता है, जब भी आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हो या हाई ग्रोथ में जाते हो, अगर 1 या 2 क्वार्टर वो स्टॉक में अगर बिलो एवरेज परफॉर्मेंस आए, या तो फिर किसी भी कारण से अगर 1 या 2 क्वार्टर में अगर प्राइस उसका मूव नहीं होता है, देन प्राइसेस कैन सडनली कोलैप्स, राइट? इट कैन बी अ वेरी वेरी वोलेटाइल प्ले. ओके, देयर आर सम पीपल हु डोंट लाइक दैट मच वोलेटिलिटी. सो राइट, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड मोमेंटम. तो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट हम कभी करते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट हम तभी करते हैं जब भी मार्केट में लेफ्ट राइट एंड सेंटर यू आर इन अ वेरी वेरी शार्प बुल मार्केट. ओके, यू आर इन अ वेरी स्ट्रांग बुल मार्केट, जैसे कि हमने बुल मार्केट बिफोर प्रायर टू सितंबर 2024 जो देखा था, राइट? दिस वाज अ वेरी स्ट्रांग बुल मार्केट. ओके, दिस फेज. Okay, a very very strong bull market. We are not yet in a strong bull market. Maybe it may start, but this is prices are moving at a very fast clip. So this is again an example of a strong bull market. तो strong bull market यहाँ नहीं होता है. See, this is trading in hindsight. अरे मैं अगर इधर लेता था तो क्या होता था, वो नहीं. That is trading in hindsight. जो हो गया है ना, तो उसमें हमें लगता है कि मुझे ये करना चाहिए था. But markets, they are predictive model. हमें एंटिसिपेट करना है कि मार्केट क्या करेगा. Okay, so this is concepts of growth, momentum. You have, if you want to be a part of momentum investing, you can also go in for mutual fund, which are, they give you high momentum stocks, or you also have momentum, निफ्टी मोमेंटम इंडेक्स. तो उसमें से स्टॉक सिलेक्ट कर लो. तो उसमें जो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, तो निफ्टी ग्रोथ इंडेक्स है, दे आर हाई ग्रोथ कंपनीज. ओके, सो यू कैन क्रिएट अ फिलोसॉफी कि आपको कौन से टाइप ऑफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट में जाना है. ओके, सो दैट इज समथिंग ऑन वेरियस इन्वेस्टिंग स्टाइल्स. या, so I think this is we have covered a very very important topic. Anything you want me to anything, any questions on this topic, anyone? Yes, Manish, there is a question from Jaiprakash ji. How to choose a good stock for trading and investing? आप investing भी लगा दो कि how to choose a good stock for investing and trading. See, okay, see, basically trading is getting in and out really fast. Investments is something that you buy and hold. So couple of things you can do. Agar if you are a very very advanced player, okay, you can get into a reasonably good stock and then trade in different instruments. So I know somebody who only trades in one stock. Okay, okay, and he only trades in ICICI Bank, right? So उसके पास क्या है, उसके पास ICICI बैंक के डिलीवरी भी है. Okay, so he has got that money from stock ops के मिला था. He was with ICICI Bank for many many years, and over a period he has accumulated ICICI Bank. So what he does, he has ICICI बैंक का स्टॉक, तो वो स्टॉक के सामने वो ऑप्शन भी प्ले करता है. So if you want to get into that sort of a scenario, I would say look at those stocks which are steadily moving up high or low, and then start to trade in it. So how do you trade? Whether you want to trade day trade,
ओनली इन कैश सेगमेंट, या तो फिर आपको एफएनओ में ट्रेड करना है, या तो फिर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है। तो उसमें क्या हो जाता है कि अगर आपके पास टॉप नॉच स्टॉक है तो आपको उसमें अच्छा मार्जिन भी मिलता है आपको। सो दैट इज हाउ यू कैन सिलेक्ट दैट स्टॉक। सो वी लुक एट टॉप फंडामेंटली। मेरे हिसाब से टॉप निफ्टी 50 में से 5 स्टॉक ले लो, उसमें डिलीवरी ले लो और उसी में फिर बाद में ट्रेड करो। So that is one thing that you can do. Whether it is very easy to say but when it comes to actual practice, things can change, because suddenly अगर आपका investment stock है उस पर कुछ होता है और एक very sharp decline आता है, then you need to figure out what you are going to do about it, right? Jay Prakash ji, is this helpful? Yeah, I think so. And okay, and how to choose a stock for investment? What are the parameters that they need to look for? See, basically आपका स्टाइल क्या है वो आप पहले डिसाइड करो। Mhm. ओके, डू यू रियली वांट टू गेट इन फॉर द लॉन्ग रन? आपको 10-15 साल के लिए अगर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है? तो फर्स्ट यू नीड टू बी क्लियर अबाउट व्हाट इज द बॉल गेम दैट यू वांट टू प्ले। ओके, आई वुड से दैट व्हेन यू बाय अ स्टॉक यू शुड बी श्योर, रीजनेबली श्योर, कि आप इसको कम से कम कितने टाइम के लिए होल्ड करने वाले हो। 99.99 रिटेल इन्वेस्टर्स, दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट। ओके, तो क्या करते हैं कि मैंने ये स्टॉक लिया है, अरे 4-5% बढ़ गया तो चलो अरे बेच दिया। फिर क्या होता है, अरे आज मेरे को एफएनओ में लॉस हो रहा है, तो मेरे को आज लॉस घर पे नहीं लेके जाने का, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं मेरा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है मैं बेच दूंगा। यू नो सो फर्स्ट थिंग इज यू गॉट टू सिलेक्ट व्हाट इज द बॉल गेम दैट यू वांट टू प्ले। आपको इन्वेस्टमेंट, और उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया चूज करो। अगर आपको लॉन्गर टर्म, तो आप वैल्यू इन्वेस्टर, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टर में इश्यू है कि मार्केट दे हैव टू बी इन अ डिक्लाइन, सो मे बी एट करंट लेवल्स टीसीएस is a reasonable value investment buy, but it is not necessarily that it is at a bottom. अगर मार्केट में खराब हो सकता है तो और 10-15% भी नीचे जा सकता है। Okay, so ideally, if you want to go in for longer term investments, I would say initial phase में look at least first couple of years of your investment journey. Look at large cap stocks, very strong companies, उसमें investment process शुरू करो, क्योंकि उसमें volatility कम होती है। Okay, as you gain experience, as you learn more about different types of investing, growth investing का parameters क्या होता है, then you can go in for this different type of moments. Momentum investing में you need to be very strong with your price indicators, technicals, price movements। अगर आपको मोमेंटम इन्वेस्टमेंट में अगर पार्टिसिपेट करना है तो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में भी उस तरीके का मोमेंट होना चाहिए फॉर योर मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्टाइल टू बी सक्सेसफुल। Okay, because momentum investment will only go for strongly moving stocks, and strongly moving stocks can be expensive आफ्टर अ प्रोलॉन्ग रैली। मार्केट में अगर काफी समय से रैली आई है और मोमेंटम स्टॉक्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो एंड व्हेन द मार्केट टर्न्स, योर मोमेंटम स्टॉक्स कैन हैव अ वेरी शार्प डिक्लाइन। सो यू हैव टू बी रियली बी श्योर अबाउट व्हाट इज द स्टाइल, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट स्टाइल। इट इज इट इज द स्टाइल दैट सूट्स योर वे ऑफ अप्रोच। Mhm. या मनीष, और दो क्वेश्चंस है, हम लोग दोनों को मिक्स करके लेंगे। एक प्रवीण कुमार जी का एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फंड, एंड सेकंड इज कौन सा सेक्टर्स, व्हिच आर द सेक्टर्स दैट लुकिंग गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years पर्सपेक्टिव, एंड हाउ, दोनों का आप मिक्स करके थोड़ा बता दीजिएगा। Okay, MTF. See, MTF is a facility that is provided by the stockbrokers to the clients. तो उसमें क्या होता है कि आपका जो स्टॉक पोर्टफोलियो है, डिपेंडिंग कि आपके स्टॉक पोर्टफोलियो के कंपोनेंट्स क्या है, उस हिसाब से आपको मार्जिन देते हैं। दैट मार्जिन यू कैन अगेन डिप्लॉय इट इन स्टॉक्स। द मार्जिन इज नॉट फ्री, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सब ब्रोकर के अलग अलग होते हैं एमटीएफ शेयर्स के लिस्ट। सो मे बी पेटीएम मनी का भी एक अलग लिस्ट होगा जो करेक्ट। शायद दूसरे ब्रोकर का नहीं होगा। तो सबसे पहले एमटीएफ में आप जाइए, आपके स्टॉक्स वो एमटीएफ लिस्ट में है कि नहीं पहले वो देखिए। उसके बाद उस पे आपको कितना मार्जिन मिलता है। मे बी
बहुत से मतलब टॉप नॉच स्टॉक्स होगा रिलायंस या, तो उस पे आपको 60-70%, 80% तक भी मिल सकता है. अगेन इट डिपेंड्स, इट डिफर्स फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर. सो आई डोंट नो, ऑल ब्रोकर्स का मुझे मालूम नहीं है, बट सर्टन ब्रोकर्स they can give you a higher margin on good quality stocks. You can get, you will So get when you lower. Manish ji, when you say higher margin, इसका मतलब किसी ने 1 लाख रुपए का शेयर्स खरीदा, हाँ, तो 25,000 रुपया देके वो 1 लाख रुपए का शेयर्स खरीद सकते हैं, और बाकी जो 75,000 रुपया है, दैट इज गोइंग टू बी फंडेड बाय द ब्रोकर. एम आई राइट इन yes, अंडरस्टैंडिंग yeah, दैट? yeah. So अगर, yeah, so that is margin trading. आपके पास existing portfolio पे आपको margin मिल सकता है. ठीक है. तो इसमें एडवांटेज क्या है? एक तो आपके पास लीवरेज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है. सो यू डोंट रियली हैव टू गो इन फॉर फ्यूचर्स. फ्यूचर्स में लॉट साइज का इश्यू आता है कि आपको मिनिमम इतने शेयर्स लेने ही पड़ते हैं. जब भी आपको एमटीएफ में आपको लीवरेज मिलता है, बट यू कैन डिसाइड ऑन द क्वांटिटी. ओके, आप समझ गए? आई होप आई एम बीइंग क्लियर ऑन दिस. यस यस. या एंड वहां पे कितना इंटरेस्ट रेट जैसे चार्ज? it, I don't know, I wouldn't know, it differs from broker to broker, maybe आई anywhere थिंक अराउंड from 10%, 9 10 9.5 9 to yeah, 10%. 10% plus or minus 1% here and there. I don't know अभी ये इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो उसका एमटीएफ पे क्या इफेक्ट होगा. बट आई थिंक, बट बिफोर गोइंग इन फॉर दैट, जो इन्वेस्टर है, जो उनको पूरी तरह से स्कीम समझ लेनी चाहिए. That is very, so spend some time in understanding what the product is and then go for it. Yeah, there was another question on related to this Which are also. the sectors that are looking good at this point of time? And Sevabrata ने पूछा है कि defense sector, how status of the defense sectors and any other sectors that looks good. See, I think I would still see banking is still looking good. That is, it is also not performing sector. Another sector I think that could do really well is AMC's mutual funds. So again, that comes a part of your financial services sector. Can you show it with the Uh, chart? See, financial services sector, they are very closely related to, so insurance companies, mutual funds. So mutual fund, that is AMCs. So HDFC AMCs वगैरह जो है ना, NAM और UTI AMC. So that stock. So this is financial services. So इसमें काफी सारे, see, these are outperforming sectors. Okay. So if the rally continues, financial services sector should gain a fillip. Banking sector will also gain fillip. Defense sector can get, uh, it has always been in limelight, and going forward also defense sector will be attractive, but I think I would let it just cool down a little bit. और मे बी आप पोर्टफोलियो एलोकेशन जो करते हैं ना, तो डिफेंस सेक्टर में अभी बढ़ गया है. आई डोंट नो वेदर दीज गाइस दे हैव चार्ट ऑफ डिफेंस. बट एनएससी में तो आ गया है. दे हैव कम अप विद, ओह या, 50 इंडिया डिफेंस. सी, it has shot up, right? It's a relatively new product. See, just there's a shot up quite a bit. Okay, defense sector के ETF. So I think just wait for at least a 5-10% cooling down before you start to invest in it. But again, this could be a this can also be a very volatile sector, simply because it has already run up a little bit. So uh, I would say just wait for it to cool down, or maybe just put in a very small percentage of your portfolio. Defense, I think, is going to be evergreen for next quite a few years. It has almost doubled since March से लेके देखो 4,900 वाला ये 9,000 प्लस हो गए. तो almost it has doubled in last couple of months. मार्च वाला आप देखो अभी कौन सा है, 3 महीने में डबल हो गई. So अच्छा, okay. yeah, Manish, there's a yeah. follow-up questions on MTF only. प्रवीण कुमार जी से होल्डिंग पीरियड ड्यूरेशन क्या है? एक है कि मतलब एनी ड्यूरेशन कितना टाइम के लिए एमटीएफ में खरीदे तो होल्ड कर सकते हैं? आई थिंक इट कैन बी एनी टाइम, यू कैन होल्ड इट फॉर इट 1 कैन बी वीक. एनी टाइम. जब तक आप मार्क टू मार्केट देखो, अगर आपका वैल्यू थ्रेशोल्ड के नीचे जाता है, तो अगर आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और या तो फिर सिक्योरिटीज ऐड करना पड़ेगा. पर जब तक आप ब्याज देते हो, देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम, एंड एंड होल्ड इट फॉर 1-2 years. यू कैन होल्ड इट फॉर एनी ड्यूरेशन. या आपको यू इंटरेस्ट कैन, रेट भरना है, एंड जैसे शॉर्टेज आएगा तो एंड या, आपको हाँ, रिफंडिंग करना है. अच्छा, हाँ. एक पवन जी का क्वेश्चन है, मार्जिन ट्रेडिंग एंड एमटीएफ का फर्क क्या है?
What is the difference between margin on holding versus MTF? MTF is सेम ही है, वो synonymous terms है. See, futures में जो है, you have limited number of stocks, 180 or okay. The quantity is decided by the I think he's talking about pledging shares. You know, when you pledge, margin pledge. हाँ Uh, तो मार्जिन प्लेज पे आपको यू कैन यूज इट टू फंड एनीथिंग ना. एफएनओ में भी करना है तो आपके पास अगर प्लेज में मार्जिन है तो आप कर सकते हो. एमटीएफ में अगर आपके पास मार्जिन ट्रेडिंग फंड है तो आप 50,000 का जो आपने जो लिया है तो उस पे mhm, आपको ये मिलेगा. प्लेजिंग ऑल्सो, अनलेस यू रिमूव द प्लेज यू कैन नॉट सेल इट, बट आई थिंक एमटीएफ में वो नहीं आता. mhm. I ओके think यू I will get a product manager tomorrow, but let me try to answer. Uh, कि या यू margin कैन गेट, यू में कैन, दैट्स अ गुड आइडिया. एक mhm, प्रोडक्ट मैनेजर का है, आई थिंक पेटीएम का भी, आई थिंक एमटीएफ इज प्रोडक्ट इज ऑनलाइन. So maybe you can get a product manager tomorrow, and if you can, that would be great. okay. Yeah. So ठीक है Pawan ji, so tomorrow we'll get a product manager and we'll be explaining this concept. And how to master swing trade. There's a question from Suraj Shukla, how to master the swing trade. We'll talk about कल जब टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे, we'll talk about that. Is it okay? Yes. So So please come Suraj ji, tomorrow. So tomorrow हम लोग क्या करेंगे? Tomorrow we are going to purely technical trading का session होगा वहाँ पे. And how to time your entry, how to time your exit, intraday trade, swing trading, positional trading. So अलग अलग time frame में आपको किस तरीके से trade करना है, those are the concepts that we are going to discuss tomorrow. Very specifically, purely technical trading. So एक रिंकू कुमार सैनी का क्वेश्चन है, how long can do stock as pledge? Do we have to pay interest to broker? And if trading ball gets zero, then how may it last? Okay. So again, Rinku Kumarji, tomorrow we'll have a product manager and he's going to explain it. Yeah, sure, Pravinji. Right. So let's be not try to give something. We want to give you a precise information, precise knowledge about the product. So we'll get a product manager and he's going to answer that. Okay. So please do join tomorrow. And can you provide top 3 stocks brokers? Okay, that is a question that you have to swing trade के हो गया. Cryptocurrency invest में करना चाहिए है क्या? So I don't understand that product. So I think I don't see, even SEBI has paid this quite that as an investment advisor we cannot comment on cryptocurrencies. So I think I'll let that pass. Okay. So in a way, to be on the safer side in India, we should better trade and invest on the regulated products, SEBI and RBI, whatever products is regulated by the exchange or the government. So these are more recognized. Leverage margin means what? Leverage and margins means what? That's a question from Ravi Chandran Reddy. See, leverage means you are trying to control an asset uh, with a relatively smaller sum of money. देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपका 15 लाख का कोई कॉन्ट्रैक्ट है एफएनओ का, तो आपको अपफ्रंट मार्जिन कितना देना पड़ता है? तो मान लीजिए रफली अराउंड 20%. तो तीन, तो यू आर लीवरेजिंग 5 टाइम्स. ओके. सो लीवरेजिंग इज अ डबल एज स्वॉर्ड. इफ यू मेक इट, तो अगर आपने 5 टाइम्स लीवरेज किया है तो, और प्राइस अगर if the price goes up, let's say it goes from 100 to 110, then probably you are doubling your money. Okay. So if it goes up by 20%, you are doubling your money. If it goes up by 10%, you are making 50% on your investments. But again, अगर reverse आता है, you will end up losing a lot of money. Leverage is a very enticing, but it can cause havoc on your emotional makeup. ओके. काफी लोग मार्केट में आता है कि चलो इसमें 2-3 शेयर्स मेरे 2-3 ट्रेड सही हो गए, नाउ आई एम रेडी टू टेक बिग ट्रेड्स. सो you leverage should be only used to an extent by very by experienced traders or investors.
Okay. Uh, in something like in options, you can probably get 500 times because you are only paying a premium for that asset and it's a wasting asset. वो कुछ समय के बाद वो जो contract है वो खत्म हो जाएगा. Then your value of that particular instrument will be zero if your options is expiring uh, worthless. So so that is what you have to play. So leveraging is, you know, it's uh, it's just taking a bet, an outsized bet beyond what you have. तो आपको मार्जिन तो देना ही पड़ेगा इन द सेंस कि अगर आपने कोई स्टॉक मान लीजिए 1000 रुपीज में लिया है और 990 है, तो आपके पास आपको उसको मार्क टू मार्केट बोलते हैं, आपको 10 रुपीज डिफरेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट आपको वो देना पड़ेगा. सो लीवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड. हाउ यू यूज इट प्रिसाइसली, हाउ मच यू लीवरेज. लीवरेज का मतलब ये नहीं है कि देखिए अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपने एक टीसीएस का लॉट लिया है फॉर एग्जाम्पल दैट इज वर्थ ओनली 15 lakhs, देन यू आर नॉट लीवरेज. ओके. व्हाई? बिकॉज योर कैपिटल जो है वो 1 करोड़ का है एंड यू हैव ओनली टेकन वन फ्यूचर एंड द वैल्यू ऑफ दैट फ्यूचर इज अराउंड 15 lakhs. तो आप यू आर नॉट लीवरेज. बट इफ यू हैव 10 lakhs या 15 lakhs एंड यू आर बाइंग लेट्स से, और उस पे 15 लाख पे अगर मार्जिन है 3 लाख और आपने 5 लॉट ले लिए, देन यू आर एक्सेसिवली लीवरेज. Okay. Anything more than 1.5 times, again this is not a ballpark figure. अगर आपका कैपिटल के मुकाबले अगर इफ यू आर ट्रेडिंग बाय मोर देन 1.5 और 2 times, यू आर एक्सेसिवली लीवरेज. वो कभी ना कभी मार्केट विल गेट बेटर ऑफ यू, क्योंकि एक बार अगर आपने लीवरेज प्रोडक्ट में सक्सेस हो गए, आप मार्केट आपके फेवर में गया, देन यू टेंड टू बिकम, देन एज इट्स अ ह्यूमन नेचर, राइट. वी ऑल टेंड टू बी ग्रीडी. ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ. So you have taken a leverage trade and you are एकदम आप सातवें आसमान पे है and you think that you are invincible, then market sort of straightens you out. So it is better to be conservative, consistently profitable rather than take excessive leverage. Okay. So leverage का एक और पॉइंट भी है कि आप प्रॉफिट्स पे लीवरेज करो. अगर आपने किसी चीज में लेट्स से यू हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10 lakhs, okay, or whatever, fine, whatever amount, so part of that profit you can leverage. But I would say never ever leverage on your capital. घर का पैसे पे leverage, मुझे तो I have learned the hard way. I would not अच्छा recommend मनीष, that somebody. Yeah. what is margin? Margin is a sort of a surety. आपने लीवरेज ले लिया बराबर, तो मार्जिन आपके पास एक्सचेंज देगा. एफएनओ में मार्जिन होता है, राइट. ब्रोकर भी आप अगर अब ट्रेड लेते हो तो देन दे नीड सम श्योरिटी ना, कि आप कमिटमेंट फुलफिल करो. No, leverage and margin trading. या लीवरेज इज एक्सेसिव. सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आपने एक लॉट लिया है, ओके, 15 लाख का, उस पे आपने मार्जिन दिया है 3,000, लेट्स से 3 lakhs. ओके. देन you are paying margin but you are not leverage. Okay. But if you have 5 lakhs and you are paying 3 lakhs as margin, then you are slightly highly leveraged. But if you have 3 lakhs and you have taken a contract of 15 lakhs by paying 20% margin, okay, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा, then it will be mark to market. So leverage is what is the amount of risk that you are taking on your capital. Margin is a statutory requirement for you to enter into the trade. Okay. आप समझे. Yeah. सो मार्जिन कैश में भी होता है. देखो कैश में भी अभी नाउ ब्रोकर्स, एटलीस्ट ऑनलाइन ब्रोकर्स, काफी लोग ये कहते हैं कि भाई आप 100% आपके अकाउंट में पैसा होगा तो ही हम आपको डिलीवरी का ट्रेड लेने देंगे. इन ऑफलाइन ब्रोकर्स यू हैव 2 days ना. अगर आपने T+1 है, तो अगर अगर T+2 है, देन यू हैव 1 day टू यू नो सेंड अ क्रेडिट टू द ब्रोकर्स अकाउंट. अगर T+1 है तो आपको शाम को ही करना पड़ेगा. नहीं तो ब्रोकर अपने इसमें से, ब्रोकर हैज टू पे द एक्सचेंज, राइट. 3 दिन का अगर डिले होता है, देन ब्रोकर आइदर ही विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन यू और ही कैन स्क्वायर ऑफ इट. Okay. So I think this you have fairly answered this question. अच्छा एक क्वेश्चन है सनी शर्मा से, व्हाट इज निफ्टी बीज? Nifty Base is an ETF that is based on
द वैल्यू ऑफ निफ्टी. तो अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू इन्वेस्ट इन निफ्टी, then you can straight away invest in Nifty Bs. Nifty Bs. So it In is an fact, ETF that is based on an index. So it is called as Nifty B. सनी, हम लोग का फोर्थ सेशन जो होगा, फोर्थ सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट म्यूचुअल फंड एज वेल एज ETFs, different ETFs. There are smart beta ETFs, there are sectorial ETFs and all this different. So that is an ETF based on Nifty 50. That is how the Nifty Bs. So you can buy on the index, you can invest on the index, Nifty 50 index, so Nifty Bs. So basically, अगर आप SIP कर रहे हो in an index fund, so instead of index fund, you can do it in Nifty Bs. You also have gold ETF. तो gold ETF में अगर आपको gold लेना है, तो you can, अगर आपके पास, I don't know what, there are different ETFs, लेकिन अगर आपका 500 रुपया है तो भी आप ले सकते हो गोल्ड. आप समझे, you can invest through ETFs, which is, it's a great product. I for small investors, ETFs are a great product. Okay. There's a question, I think, short selling का ऊपर question है. What happens? I think you have already answered that question. But again, for clarity, somebody, अगर किसी ने बेचा है और उसको स्क्वायर अप नहीं किया, तो क्या होगा? ऑक्शन हो जाएगा? इसमें That फ्यूचर में या कैश में? कैश में, स्टॉक में, स्टॉक इंट्राडे. हाँ, तो अगर आपने डिलीवर नहीं दिया तो क्लोज आउट हो सकता है, पेनल्टी लग सकता है आपको. Absolutely. So this is called auction procedure, as said settlement, Mr. Mohammed. सेटलमेंट प्रोसेस में आपको डिलीवरी देना पड़ता है. अगर आपका पास शेयर्स नहीं है, तो एक्सचेंज हैज टू बाय दैट शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, दे विल आइदर बाय, दे विल, हाँ, तो ऑक्शन भी कर सकते हैं. तो ऑक्शन होता है, वो भी होता है. और जो भी पेनल्टी आपको लगेगा वो लगेगा, अगर आप डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं. ओके. तो बेसिकली अगर आप कैश, तो इसमें समझने की बात यह है कि अगर आप कैश मार्केट में शॉर्ट कर रहे हो, तो एंड ऑफ द मार्केट आप उसको, वो ट्रेड को क्लोज कर रहे हो. ठीक है, और ध्यान रखना, T2T में वो शेयर है नहीं. तो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में अगर है वो शेयर, तो आपको कंपलसरी डिलीवरी देना है. Okay. There's another question, I think, with respect to, again, you have to square it up. Now, see, in an online platform, Mr. Muhammad, if you short sell, automatically it gets squared up. So you will not be able to hold it, carry it forward more than one day in the current situation. Of course, there is a stock borrowing, lending, borrowing process. I'm not very sure about that process, but if you sell it, you have to square it up. Okay. Okay. Yes, Manish, you can go to the next slide now. I think we don't have much time left. Yeah, just have some small sip of water. Yeah, okay. Yeah. Right. So basically, trading versus investment goal is building long-term wealth on short-term profits. से देखो ये बात तो. Now we are on the topic ki what is the difference between trading and investments. Very, very important. First is that what is the goal? Long-term wealth और earn short-term profits. देखो ये दो चीज अलग है. देखो, काफी लोग कहते हैं कि डे ट्रेडिंग, लेकिन आप डे ट्रेडिंग कितने साल तक कर सकते हो? जस्ट थिंक अबाउट इट. 2 साल, 5 साल, उसके बाद okay, swing trading, a couple of weeks, minutes. But again, this is a style. There are people who do it for years. But essentially, investing is building long-term wealth by remaining in that, in those instruments for a prolonged period. चाहे वो ETFs हो, चाहे वो stocks, sector based funds हो या whatever. Okay. So time horizon is long term. Years you can hold on to a particular investment for a long time. Okay. Ultimately, you are betting, whether you are a short term trader or you are a long term investor. Ultimately, you are betting on the direction. Okay. Okay. The difference is in what time frame. क्या आप कोई स्टॉक बहुत टाइम के लिए लेने वाले हो, या तो अभी हम लोग फॉर एग्जांपल बात कर रहे थे डिफेंस सेक्टर की. सो वी नो दैट इट इज slightly extended, but maybe quite likely that maybe over 4 or 5 years we will see an explosive growth in this segment. So uh, सो बी श्योर, इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड लेते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इक्विटीज,
तो आप श्योर रहना कि आपको ये कितने समय के लिए होल्ड करना है। नहीं तो उसमें क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म लॉस कवर करने के लिए आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हाथ से निकल जाता है। फिर 4-6 महीने के बाद, जब भी आपका लॉस, 1 साल के बाद, जब भी आप देखते हो, अरे ये स्टॉक तो मैंने 50 रुपए में लिया था, 55 में बेच दिया, लेकिन अभी इसका भाव 100 रुपया हो गया। ओके, ये आपको ये फीलिंग है डिससेटिस्फैक्शन की, वो रहती है। ओके, अप्रोच बाय एंड होल्ड क्वालिटी स्टॉक्स, वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स, और दो सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज। और अप्रोच इसमें क्या, ट्रेडिंग में बाय लो सेल हाई, एंड इट इज इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम पीरियड। तो आई थिंक एनीथिंग मोर देन 1 to, I would say, 1 day to 1 week is extremely short term trading. You can say 1 week, at least 1 week to 3 weeks is swing trading, intermediate, and so on. And anything more than 6 months or 1 year is long term investment. So long term investment में आप कम से कम 1-2 साल के लिए एक व्यू बना के आप ले सकते हो। Okay, frequency of transaction is very low. I know some investors who take only a couple of trades in a year. So they buy their stocks, but again they are value pickers, very hardcore researchers, and they so very infrequent transactions. और ट्रेडिंग के लिए वेरी हाई फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन, जो हम आजकल सुनते हैं ना, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स या क्वांट बेस्ड ट्रेडर्स, जिसका एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग अप्रोच होता है। सो इट इज थिंग्स आर आल्सो गेटिंग ऑटोमेटेड to an extent. Whether it is a profitable or not profitable, again it's a question of perception. uh, right. Then analysis focus, fundamental analysis is very important. You can have fundamental stocks in a good quality trend. Okay, that is why learning price action is also very important. So टीसीएस में भी आपको ऐसे, टीसीएस में एक ऐसा समय आएगा जब भी समथिंग लाइक टीसीएस विल आल्सो बी यू नो so something like TCS will also be in a strong momentum. ओके, तो टीसीएस भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हो सकता है, या तो फिर रिलायंस में भी ऐसा एक समय आएगा कि मे बी शायद वंस और ट्वाइस इन अ ईयर वेयर इट इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. So you can do short term trading when there is strong momentum, or and when the same stocks comes down, you can be a value investor. So in case of short term trading, you have to choose your stocks very wisely. आपको किस पे करना है. मेरा एक सजेशन है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे जाने वाले हो तो पूरा मार्केट मत देखो. Be very clear about what are the type of stocks you are going to trade, whether it's going to be large cap stocks or they are going to be mid cap stocks, whether they are in FNO, and so on. Okay, so there are ways in which you can filter out and select stocks that you trade. So analysis focus can be technical analysis. It can also be news based, event based trading, in the sense कि for example Suzlon का result, exceptional result आया था, the price went up, shot up very sharply the next day. So it can also be event based trading. Event based trading में you have to be spot on every day. You required is to do your homework कि कौन से stocks में news आए हैं. I'm not saying that not heard from the street sort of news, but there are exchange में news आते हैं. You have responsible uh, news channels like Money Control, NDTV, Profit, and so on and so forth, where they come up with news that are they are not rumors. मतलब कंपनी को, see, I'll tell you what, every company, they have to disclose to the exchange any material developments that happen. Okay, they have, so if they don't disclose, then there are penalties on the company. So so हम लोग पहले कहा था ना, stock exchange also acts as a regulatory body. So stock exchange, they disseminate this information. It is a very official way of knowing what is happening in a particular company. तो आप स्टॉक एक्सचेंजेस के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे, तो आप उसको देख सकते हो. यू कैन न्यूज. सो दिस इज व्हाट आई कॉल न्यूज बेस्ड और इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग. दे आर नॉट रूमर्स. ओके, so that is also something that can be done. Risk level is lower if you are not leveraged, and if it is done with diversification and patience. So relatively, because you are not really too worried about short-term volatility, and in a
and in an environment. See, India in this current environment is where we are on a very strong growth trajectory. ये बात शायद 2001 या 2001 से लेके 2005 तक ये ठीक नहीं थी. Then when we had that huge rally and Lehman Brothers 2007-8 में collapse हुआ था. उसके बाद but we were never growing at 6.5, 6.9 with an inflation of sub 3%. Okay. So we are in a very, very strong growth trajectory. Government spending has also increased tremendously. So we are in a different era altogether. So uh, this sort of sequence is going to remain for another probably next 10-15 years. At least in my previous webinars, I have been saying this, that we are in a very long-term growth trajectory. Long-term growth trajectory में एक या दो quarter GDP का contraction आता है, it doesn't really change the long-term picture. Okay. So investments is a great time in this current scenario. Risk level is higher provided you are excessively leveraged. See, short day trading can be very safe if you don't leverage excessively. Okay. तो अगर आपका गोल ये है कि मुझे साल का 15% या 15% से मैं हैप्पी हूँ. ओके. 12 to 15% इज आई एम हैप्पी विद दैट रिटर्न. सो दिस इज व्हाट आई कॉल एज हैप्पी रेट ऑफ रिटर्न. आपको संतुष्टि किस रेट ऑफ रिटर्न पे है ये आप डिसाइड करो. ओके. इन फिन इन्फ्लुएंसर्स आपको कहेंगे कि 5% तो आसानी से बन सकता है, ये वो, दैट इज ओके. व्हाट इज द रिटर्न दैट मेक्स यू हैप्पी. ओके. एक्सेसिव रिटर्न्स, अगर मैं 5% कमा सकता हूँ, काफी लोग मुझे, मेरे जब भी सेमिनार होता है, सर मेरे को 5% बनाना है. मैंने बोला लास्ट एक महीने, लास्ट 1 साल में कितना एवरेज रिटर्न है. बोलता है सर लॉस है. तो लॉस अगर है एंड यू आर सडनली सेइंग दैट आई वांट टू मेक 5% रिटर्न, आई मीन यू हैव टू गॉट टू लर्न. तो आपका एक लर्निंग कर्व है, वो बहुत स्टीप है. सो रिस्क लेवल इज कैन बी, यू कैन लोअर रिस्क लेवल बाय टेकिंग लेसर पोजिशन साइज. ओके. एंड फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग भी कर सकते हो. इट डिपेंड्स. आई नो सम डे ट्रेडर्स हु पुट इन manually put in around 40-50 trades a day. Okay. So they do it and they have been doing it for years and they have been reasonably successful in it. तो ये उसका ये उल्टा है. वो जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आता है, आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो उससे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आता है, वो उसको इन्वेस्ट करता है. ओके. अनदर गाय आई नो, उसको जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आता है उससे लीवरेज करता है. डिफरेंट स्टाइल्स, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट. ओके. तो आपको डिसाइड करना है कि एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर की आपको क्या करना है. सो अ लॉट ऑफ थॉट नीड्स टू बी गिवन to developing a trading strategy and a trading philosophy. Okay. So invest instruments that can be used in investing are basically stocks, mutual funds, index funds, and so basic. So you know normal, very very conservative type of investment strategies. So instruments, see, even having parking some funds in liquid funds or even in FDs. Okay, that is also an investment strategy. There is nothing wrong in it. Okay, काफी लोग, I know some people who park substantial amount of money in FDs. बोलता है यार अपने को टेंशन नहीं चाहिए. I have a friend of mine. He got a huge. He has sold a huge chunk of ESOPs, and bulk of his money, a substantial portion of money, he has kept in FD. तो बोलता है I don't want to be asset rich. I want to be cash rich. Okay. So that's the way he is. He still has his job, but and whatever money that he has got, only a portion of that he has put in investments in ETFs and so on. Bulk of his money is in FDs. So that's the way it is. There's nothing right or wrong about it. Okay, तो आपको क्या करना है? Instrument use, stock, options, futures, currencies, uh, options on currencies, so on and so forth. So highly leveraged instruments. Options by itself, they need not be leveraged if you know what you are doing. But if you are playing for expiry and you are taking a very strong position, बहुत ज़्यादा आप position ले लेते हो on expiry, then it can be a very very dangerous sort of a play. It requires time. I don't, ये देखो, ये statement जो है ना, less time daily and more patience, that is something that because I know a lot of good fund managers who spend around 6 to 8 hours at the minimum in researching. But at least if you are a long-term investor, you should be willing to devote time to your investments and how you are doing it. So regular reading is very very important.
trading requires constant monitoring. It can be draining. वो आपको एनर्जी सैपिंग हो जाता है कि शायद आप 9:15 से 3:30 बजे तक रोज स्क्रीन के सामने बैठते हो. It can also be a health hazard because over a long period of time sitting at one place in constant position can really result in health issues. So you have to also take that into account. It requires quick decision making. So your brain waves, your brain needs to be function optimally. You need to sleep well. You need to eat well, and so on. देखिए सब चीज में sacrifice होती है. Okay. So, examples could be investing in TCS or in defense fund for 5 or 10 years because it's very simple. कि 5-10 साल में भी इंडिया का डिफेंस expenditure is not going to go down, and more funding in infrastructure projects, defense projects, shipping, building ports, that is going to happen. We are a growing economy, and more uh, funds will be needed for this sort of activities. And trading would be buying and selling either Reliance shares in options, in futures, or simply in your cash market on a day-to-day basis. So that is what is a very very short-term synopsis of what is trading versus investments. Yes. Just yeah. आई थिंक मनीष जी आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो एक्चुअली आज का प्रोग्राम आपने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट रिक्वायर्स टू बी अ ट्रेडर, व्हाट रिक्वायर्स टू बी एन इन्वेस्टर. वी हैव ऑलमोस्ट कम टू एन एंड ऑफ दिस प्रोग्राम एंड ऑल्सो मैं आपको कहना चाहूंगा कि डिस्क्लेमर अगेन, थैंक यू सो मच कि देखिए ये पूरा का पूरा जो जितने भी स्टॉक्स हम लोग ने डिस्कस किए हैं, दिस आर प्योरली एजुकेशनल. ठीक है, दिस आर नॉट रिकमेंडेशन टू बाय एंड सेल. हम लोग का एफर्ट यही है कि प्योर जो एक्सपीरियंस से मिला हुआ नॉलेज हम लोग शेयर करें आपसे, क्योंकि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज डेफिनेटली यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए. एंड जो नया ट्रेडर्स है, नया इन्वेस्टर्स है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल नीरज जी, होगा. आई जस्ट इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट. हाँ. एक चीज समझो. एक वॉल स्ट्रीट है ना, वॉल स्ट्रीट में एक सेइंग है कि देर आर ओल्ड ट्रेडर्स, मतलब बुजुर्ग ट्रेडर है, और बोल्ड ट्रेडर्स मतलब जो एकदम दिले ट्रेडर है. I बट have ऐसा never कोई seen a नहीं है old and जो, bold traders. हाँ, जो बुजुर्ग भी है और बहादुर भी है. ओके. Hmm. So it is a skill that needs to be developed over a period. And see, your time in the markets is going to determine how good you will be after 3 to 5 years. See, the older you get, trading is an activity where the more time you devote, the more experience you. It is just like wine. The older it gets, the better you become. Absolutely, absolutely. Thank you. And Okay. and guys, again, our endeavor is to really build a skill, help you building the skill and understanding what it requires to be a good trader and investor, both technically, emotionally, psychologically. Uh, that is how we are planning these programs. So do join tomorrow. Looking forward to see you all. Thank you, Manish, for a beautiful program that you have conducted. I'm Right. sure the experiences, your knowledge, the wisdom that you have shared is going to go a long way in improving the trading and investing skill of our participants. So thank you so much, Okay. guys, Thank you, and everyone. Good luck, and see you tomorrow. stay safe, everyone. Yeah. Bye. Okay, bye-bye. Thank you.